जो किसान जो है ये गन्ने का उत्पादन महोदय बहुत परिश्रम से करते हैं, चाहे बिहार का सवाल हो चाहे उत्तर प्रदेश का सवाल हो, और उनका उत्पादन का सही मूल्य और समय पर उनका भुगतान नहीं होने के चलते एक एक साल से दो दो साल तक किसान मिल का प्रबंधक का चक्कर काटते रहते हैं महोदय। तो क्या सरकार ऐसा कोई कानून बनाना चाहती है जो किसानों का भुगतान सही समय पर मिल सके? माननीय अध्यक्ष, माननीय सांसद महोदय ने एक बहुत अहम सवाल उठाया और बहुत अच्छा सवाल है कि देश में आज क्या परिस्थिति है और पहले क्या परिस्थिति थी। दुर्भाग्य से सिर्फ ये लगता है कि माननीय महिपाल जी शायद अभी तक इतिहास के पन्नों में ही रहते हैं। उनको महाबली सिंह जी शायद इतिहास के पन्नों में ही है। उन्हें ध्यान नहीं है कि गत 10 वर्षों में क्या क्या परिवर्तन हुआ। चीनी मिलों में आज से 10-12 साल पहले कैसे गन्ना किसानों को तकलीफ होती थी, सही मूल्य का भुगतान समय पे नहीं होता था, सड़कों पे हाईवे पे आके उनको आंदोलन करना पड़ता था अपने पैसे के लिए। ये स्थिति मान्यवर आज से 12-15 साल पहले थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जब सरकार की कमान संभाली तब उन्होंने पूरे चीनी के व्यवसाय में, चीनी के उत्पादन में, गन्ना के उत्पादन के पूरे विषय को बहुमुखी सोच के साथ अपने दूरदर्शी परिणाम को सामने रखते हुए कई सारे कदम उठाए। उदाहरण के लिए चीनी मिलों को सही दाम मिले, चीनी मिलों का जो ऋण था उस ऋण को किस प्रकार से लंबे समय दे के उसको समाप्त किया जा सके, गन्ना किसानों की भुगतान करने के लिए चीनी मिलों के पास जो पैसे का अभाव रहता था उसको पूरा करने के लिए इथेनॉल को प्राथमिकता दी गई। कहाँ उस समय मात्र 1% पेट्रोल में इथेनॉल की मिक्सिंग ब्लेंडिंग होती थी, आज वो बढ़कर 12% हो गई है। एक 1200% एक प्रकार से वृद्धि हुई है। और इन दिनों में जिस प्रकार से इथेनॉल का तेज गति से इस्तेमाल हुआ उससे चीनी मिलों की भी आमदनी बढ़ी, चीनी मिलें भी वायबल हो गई, उनके पास पर्याप्त पैसा आने लगा। और उसी के कारण आप देखेंगे कि गत कई वर्षों से 99% भुगतान समय पे होता है। कोई किसान का आंदोलन देश में किधर देखने को नहीं मिलता है। मैं आपको अगर आंकड़े दूं तो 2013-14 में कुल जो केन का भुगतान था वो 57,000 करोड़ रुपए था और केन ड्यूज 2-3 साल बाद दिए जाते थे। हमारी सरकार आने के बाद अगर 2022-23 का आंकड़ा देखें तो केन का उत्पादन, गन्ने का उत्पादन भी लगभग 1.5 गुना हो गया। उसके अलावा जो वैल्यू थी गन्ना किसानों की वो 1,15,000 करोड़ रुपए हो गई और वो 1,15,000 करोड़ में मान्यवर 1,14,000 करोड़ समय पे हो गया, 99% से ज्यादा। और मात्र 516 करोड़ यानी 99.5% पे हो गए। मान्य 516 करोड़ सिर्फ रह गए। 3 चीनी मिले अधिकांश इसमें और यूपी की है, वो तीनों चीनी मिले, उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई हो रही है। ये जो बात है कि गन्ना किसान को भुगतान में तकलीफ, इस पे जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रहार किया, जिस प्रकार से उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए कई सारे कदम उठाए, जिस प्रकार से उनको समय पे आज पूरा पैसा मिलता है, उसके कारण प्रोडक्टिविटी, उत्पादनता भी बढ़ी है गन्ना किसानों की। और देश भर में गन्ना किसानों ने, चाहे वो समय समय पर इथेनॉल का उपयोग ज्यादा हो, एक्सपोर्ट हो, अलग अलग माध्यम से, एक तरफ गन्ना किसान खुश है, दूसरी तरफ सभी कोऑपरेटिव, श्रीनिवास जी हाथ उठा रहे हैं, सभी कोऑपरेटिव मिल्स देश भर की पुनः जागृत हो गई है।
पुनः प्रॉफिटेबिलिटी में आ गई है, पुनः उनके कर्मचारियों को नौकरी सुरक्षित हो गई है। और दूसरी तरफ शुगर इंडस्ट्री के कारण आज पर्यावरण को भी लाभ हो रहा है। पर्यावरण में प्रभाव हुआ कि इथेनॉल ब्लेंडिंग के कारण पेट्रोल का इंपोर्ट कम हुआ, तो विदेशी मुद्रा में भी लाभ हुआ। तो ये जो बहुमुखी सोच है, इसके कारण आज देश तेजी से प्रगति कर रहा है और देश के गन्ना किसान भी बहुत राजी खुशी आज इस काम के साथ जुड़े। क्वेश्चन नंबर 64, सी थॉमस। मिनिस्टर को रिप्लाई कर। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, नहीं बोल सकते सर, ये बकवास शब्द नहीं बोल सकते, ये हटा देना चाहिए। ये बकवास शब्द, ये मंत्री जी के लिए बकवास शब्द यूज कर रहे हैं, ये बकवास शब्द हटा देना चाहिए, कार्रवाई से हटा देना चाहिए। रिकॉर्ड में के लिए इन्होंने कह दिया क्या बकवास कर रहे हैं, ये गलत बात है। ये बकवास शब्द हटाइए, हाँ हटाइए, बकवास शब्द हटाइए। बकवास शब्द नहीं कह सकते, ये बकवास शब्द नहीं कह सकते। कि ऐसे हल्ला गुल्ला करने के बदले पहले जानकारियां निकाले माननीय सदस्य। 22-23 का पूरे देश में मात्र 516 करोड़ बकाया है। ये जो बात कर रहे हैं, ये अभी जो गन्ना खरीदा गया है, ये अभी के गन्ना की बात कर रहे हैं और अभी के गन्ना का पैसा पर्याप्त मात्रा में पे हो जाएगा। दुर्भाग्य है कि नासमझी से आंकड़ों को हेर फेर कर रहे हैं। प्लीज। क्वेश्चन नंबर 64, मंत्री जी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री आप थोड़ी है। अध्यक्ष महोदय, उत्तर सभा पटल पे रखते हैं। शशि थरूर जी, आप Thank you very much. Thank you very much, Mr. Speaker. I would like to applaud the Wise Kiran scheme, which promotes women in STEM subjects in our education system. I must say, sir, this is very, very interesting because the need is great. I have had the great pleasure, sir, of conducting, as the main speaker, a number of convocations in our country in the course of the last few years that I've been an MP, the last 15 years. And in the 75 or 80 convocations where I've spoken, it has struck me, sir, that even in institutions where women are a very small percentage of the workforce, of the student body, where women are maybe even just 25% of the student body, 90% of the prize winners, the diploma holders, the gold medalists tend to be women. This has led me to believe that the future is female, sir, and I'm glad we're doing this scheme. Having said that, however, it is also true that only 1/3 of the women, despite their great successes in the education system, only 1/3 of the women actually are in STEM careers. And what is particularly worrying, sir, is that promotions in STEM careers seem to be denied to women. We are seeing a situation in which pretty much in every STEM discipline, the top positions are regularly occupied by men. Does the government have any thought about whether there could be gender affirmative programs, not only to ensure that women who do well in their studies get career opportunities, so the number of women in STEM disciplines and careers goes up, but also whether there should be some encouragement to put women in leadership positions, because it's startling to see that when a woman and a man, even the woman with higher marks, gets into a STEM career, the man's promotion comes 2 or 3 years before the woman's does. And this is a pattern that has been studied, and I would love to know if the government has looked into the matter and has any thoughts on how to remedy it. Thank you, sir. Speaker, sir, at the outset I have to thank Honourable Member Shri Shashi Tharoor ji for having appreciated the WAS scheme, and I once again wish to reassure the entire House that this government has already been giving highest priority to enhance the role of women in every sector.
And Prime Minister Modi has been reiterating this very often whenever he has a platform to speak. And he's been talking about Nari Shakti, Nari Samarth. In fact, in this house also, the very first bill that was presented was dedicated to the woman power of India. And therefore, I would like to also clarify that there is no gender bias in carrying out promotions. And you will be pleased to know when I just cite a figure that we have, of course, as you rightly said, the number of women scientists is still lower compared to the male sites. Yes, it is, to be precise, 18.6%. The R&D projects run by women are up to 25%. But the higher education enrollment has increased tremendously over the last few years. It's gone up to 43%, which means tomorrow, these girls, when they take over those positions, the proportionate number of the working scientists will also go up to almost 50%. Now, having said that, as far as the contention that the top positions are manned only by men, I would rather say they are now being manned by women. In the sense, for example, in space, our Aditya project is being headed by a woman called Jijar from Tamil Nadu. Similarly, the Chandrayaan project, the joint director, the number 2, is again a lady called Kalpana from Karnataka. So it's not true. On the other hand, in fact, the common realization is that in the science fraternities, in the science streams, the women have already evolved from the participatory role to the leadership role. It is now they are deciding to what extent the men have to be participants in what roles. And I think, without being boastful, the very scheme of WAS was started by the NDA government when Mr. Vajpayee was the Prime Minister. And thereafter it was taken up by Prime Minister Modi after he took over in 2014. And he further extended in the form of the Kiran scheme, which is... नहीं हुआ वो बता रहा हूं मैं बीच में ये हुआ कि बजट 2014 में था 44 करोड़ और 2024-25 में 135 करोड़ यानी तीन गुना बजट बढ़ा. Having said that, we are already in it, and I am glad that Kerala is also getting tremendous benefit out of it. We have started a scheme called CURI, which is providing support to women in the university levels. So incidentally, Kerala does not have a women university, but we have extended the same support to the Kerala colleges. So we have 2 in Kottayam, 2 in Thrissur, 1 in Thiruvananthapuram, 1 in Ramaswamapuram, and 1 in Allapur. So we are extensively giving support regardless of whichever the government there. Question number 65, Sri Dhairyashil Mane. माननीय मंत्री जी. उत्तर सभा पटल पर रखा है. श्री प्रताप राव जाधव. धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे प्रश्नकाल में आप जो अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं. माननीय अध्यक्ष जी, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बढ़ाने की ओर तेजी से अपने कदम बढ़ा रहा है. माननीय अध्यक्ष जी, हम इस लक्ष्य की प्राप्ति तब तक नहीं कर सकते जब तक कि हम भारतीय उद्योगपतियों को विदेशों में अपना कृषि एवं अन्य औद्योगिक सामान निर्बाध रूप से बेचने की सुविधा मुहैया नहीं करा सकते. माननीय अध्यक्ष जी, विभिन्न देशों में भारत के निर्यातकों पर टैरिफ तथा नॉन टैरिफ बैरियर लगाकर भारत के सामान को उन देशों में बेचने से रोका जाता है. महोदय, कई देश ऐसे जो भारत के निर्यातकों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी तथा विभिन्न प्रकार की कस्टम ड्यूटी लगाकर भारत के सामान को महंगा कर देते हैं, जिसकी वजह से भारत का निर्यातक अपने सामान को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नहीं बेच पाता है. महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या भारत सरकार इन निर्यातकों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए विभिन्न देशों की सरकारों से बातचीत कर कोई ऐसा हल निकालेंगी कि जो अन्य देशों में हमारे निर्यातकों पर भारी टैक्स का बोझ कम हो सके. साथ ही साथ भारत सरकार ने
कृषि उत्पादों जैसे कि कपास, सोयाबीन, चीनी, चावल के निर्यात पर जो प्रतिबंध लगा है उनको हटाने पर विचार करेंगी ताकि भारतीय निर्यातक अपने सामान को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आसानी से बेच सके। अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से ये सूचित करना चाहती हूँ कि हमारे कृषि निर्यात बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहा है और पिछले वित्तीय वर्ष में हमारा जो कृषि निर्यात रहा वो $50 बिलियन से ज़्यादा रहा। जहाँ तक हमारे निर्यातकों की दूसरे देशों में जिन ट्रेड बैरियर्स का वो सामना करते हैं उसका विषय है, तो इस संबंध में मैं बताना चाहती हूँ कि हर देश अपने टेरिटरी में आने वाले प्रोडक्ट्स की सेफ्टी और क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए अपना एक रेगुलेटरी स्ट्रक्चर बना के रखता है और कई बार ये डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को भी अप्लाई करते हैं और निर्यातकों को भी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दो देशों के रेगुलेटरी स्ट्रक्चर्स में आपस में कुछ गैप्स होते हैं, कई बार इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होता है या किसी तरीके की आर्बिट्रेरीनेस होती है या लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी होती है, जिसके कारण ये बैरियर्स की तरह प्रतीत होते हैं। ऐसी अवस्था में निरंतर भारत सरकार और हमारा मंत्रालय जो हमारे निर्यातक किसी भी देश में अपने कृषि उत्पाद को या किसी भी अन्य उत्पाद को निर्यात कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के बैरियर का, ट्रेड बैरियर का यदि वो सामना करते हैं तो उसके लिए हम उनकी मदद करते हैं। इसके लिए हमारे पास कई मैकेनिज्म्स हैं। अभी हमने हाल ही में एक टास्क फोर्स भी गठित की है। ये टास्क फोर्स एक ऐसी कोर टीम के रूप में है जिसमें 25 हमारे अलग अलग मंत्रालय, हमारे EPCs और हमारे एक्सपोर्टर्स, स्टेक होल्डर्स सभी लोग शामिल हैं, जिनसे हम चर्चा करते हैं और किस कंट्री में वो कौन सा ट्रेड बैरियर फेस कर रहे हैं उसके बारे में उनके स्पेसिफिक ट्रेड कंसर्न को समझते हैं। इन विषयों को हम आवश्यकता पड़ने पर WTO में भी उठाते हैं और अलग अलग जो हमारे ट्रेड पार्टनर्स हैं उनके लिए जो हमारे पास इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स अवेलेबल हैं उसके माध्यम से और अपने मिशंस की मदद से उन देशों से भी हम बातचीत करते हैं और बातचीत के जरिए इन बैरियर्स को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। श्री गौरव गोगोई जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सर, ये ट्रेड को लेके ये सवाल है और ट्रेड में हम देखते हैं कि चीन से बहुत सी चीज़ें आज भी भारत इंपोर्ट करता है, विशेष रूप से मोबाइल फ़ोन में। सर, भारत में आज हम मोबाइल फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग तो कर रहे हैं, लेकिन ये जो मेड इन इंडिया की जो मोबाइल फ़ोन है इसके अंदर अगर आप कंपोनेंट्स देखोगे तो वो मेड इन चाइना कंपोनेंट्स है। सो मेड इन इंडिया मोबाइल फ़ोन, लेकिन कंपोनेंट है मेड इन चाइना। तो जिस वक्त सर चीनी सोल्जर लद्दाख में हमारे किसानों के साथ मुठभेड़ कर रहा है, भारत सरकार क्यों चीन से ये मोबाइल कंपोनेंट्स इंपोर्ट कर रही है? क्यों भारत सरकार दूसरे देशों में नहीं देख रही कि हम दूसरे देशों से ये इंपोर्ट करें और क्यों हम अपने इंपोर्ट डिपेंडेंसी चाइना पे अब बना रखें, विशेष रूप से मोबाइल फोन में जहां पे प्रिवेसी का मामला हो सकता है, सर्वेलेंस का मामला, सर कंप्लीट एक सेंटेंस सर, सर्वेलेंस का मामला हो सकता है, स्नूपिंग का मामला हो सकता है। पूरी दुनिया में आज विभिन्न देश चाइना की जो इंटेलिजेंस कैपेसिटी है, एस्पियोनाज की कैपेसिटी है, उस पर संदेह की नजर से देख रही है और हम अपने ही मेड इन इंडिया मोबाइल फोन में मेड इन चाइना कंपोनेंट दे रहे हैं, तो हम क्यों दूसरे देशों पे अपनी बात ये तो माननी है। चलिए मंत्री जी देंगे जवाब। सर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हमारे देश में किसी भी देश के माध्यम से जो भी हम कमोडिटी इंपोर्ट करते हैं, हमारे अपने जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसके प्रोविजंस के आधार पे करते हैं, जिसमें खास तौर से सेफ्टी का जो एंगल है उसका ध्यान रखा जाता है। जो आपने स्पेसिफिक विषय चाइना के संबंध में उठाया है, इस पर मैं और जानकारी प्राप्त करके आपको सूचित करती हूँ। सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्री जी आप बोलिए। माननीय सांसद जी को आपके माध्यम से सूचित करना चाहूंगा कि ये बात भूल रहे हैं कि 2014 के पहले तो पूरे फोन बंद के बंद पूरे के पूरे भारत आते थे, उसमें सिक्योरिटी रिस्क इनको कभी दिखा नहीं किस प्रकार से बने बनाए फोन के अंदर चिप्स वगैरह के माध्यम से क्या आ सकता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आते ही मेक इन इंडिया को बल दिया, लोग भारत में आए, निवेश करें, और इसका एक सबसे बड़ा सक्सेस स्टोरी तो आज मोबाइल टेलीफोन मैन्युफैक्चरिंग है, जिसमें पूरी दुनिया में भारत ने डंका बजाया है। आज एप्पल जैसी कंपनी कहती है
कि हम हर साल डबल करेंगे हमारा प्रोडक्शन भारत में, और विश्व में जो बनाते हैं उसका 25% भारत पे बनाएंगे। माननीय सांसद जी को यह भी सूचित करना चाहूंगा, ये एक प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया में पहले फोन बनाने के लिए कंपनियां आती हैं, अमेरिकन कंपनियां भारत में बड़े पैमाने पे आ रही हैं, कोरियन कंपनियां, जापानीज कंपनी बड़े पैमाने पे आ रही हैं। जब फोन बनना शुरू हुआ और उनको दिखा कि आज मार्केट है, बड़े पैमाने पे फोन बन रहे हैं, फोन में कंपोनेंट्स लगेंगे, तो स्वाभाविक रूप से कंपोनेंट इकोसिस्टम इसके पीछे आएगा, आने लगा है, शुरू हो गया। और उनको शायद ये जानकारी गलत है कि सब चाइना से कंपोनेंट आ रहे हैं। कंपोनेंट कोरिया, जापान, ताइवान, यूरोप, अमेरिका, सभी देशों से टेक्नोलॉजी के हिसाब से। और मेरे मित्र अश्विनी जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने बड़े सख्त प्रावधान लाए हैं। उन्होंने कंपनियों को मैप किया है, टेक्नोलॉजीज को मैप किया है, सिक्योरिटी कंसर्न्स के हिसाब से जो कंपनियां हमारे हित में नहीं है, जिन कंपनियों का सामान फोन में होने से कोई भी प्रकार का सुरक्षा के ऊपर आहत आ सकती है, उनको बंद किया गया है। और जो फ्रेंडली नेशंस है और फ्रेंडली नेशंस की सिक्योर सप्लाई चेन के ऊपर आज भारत सरकार बल दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम सफलता से इस देश में निवेश भी ला रही है, टेक्नोलॉजी भी ला रही है। और मेरा मानना है जिस तेज गति से इस इकोसिस्टम को भारत डेवलप कर रहा है, ये आगे भारत विश्व का सप्लायर बनेगा। और एक आखिरी में जानकारी आपके माध्यम से देना चाहूंगा, कल ही एक कंपनी मुझे टेलीकॉम की मिलके गई जो टेलीफोन बनाती है और अन्य प्रोडक्ट बनाती है, और उन्होंने अपने निवेश के प्लान्स बताए। उन्होंने बताया कैसे पीएलआई सिस्टम से वो यहाँ और निवेश करना चाहते हैं और पूरा इकोसिस्टम भारत लाके मेड इन इंडिया प्रोडक्ट, जिसमें मेड इन इंडिया कंपोनेंट्स भी हो। लेकिन इस प्रोसेस को एक समय सीमा लगती है और ऐसे ओवरनाइट सुपरमैन की तरह आके मुझे लगता है कोई मोबाइल फोन यहाँ नहीं बनेंगे। जो काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है उसकी मैं समझता हूँ गौरव गोगोई जी भी दाद देंगे। क्वेश्चन नंबर 66 के मुरलीधरन। क्वेश्चन नंबर 66 सर। Sir, there are lot of cases in various states in India regarding the encroachment of railway lands. Sir, the reason is railway is not utilizing their own lands. In my constituency also in Talasheri, 50 acres of railway land is still vacant. So I want to know from the government whether the Railway Land Development Authority is considering any land development project under the public-private partnership in these idle railway lands. Honorable Speaker, sir, the railway lands basically are of three natures. The majority of the railway land which is shown as vacant railway land, that is basically the land along the railway tracks. That is practically the majority of the land which is shown as railway land available is basically along the railway tracks. That is kept reserved for expansion. As noticed in the budget, Honorable Prime Minister has very big vision for expansion of railway network. 3 major corridors have been approved, which will basically add about 40,000 kilometers, 40,000 kilometer और रेलवे नेटवर्क में जुड़ेगा और किस तरह से एक तेजी से रेलवे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो. So, Honorable Speaker, sir, most of the railway land is basically reserved for expansion. Outside that, whatever railway land is available is being taken up for development in various phases. Many interesting projects have been done in the recent past. In the last 10 years, some of these railway lands have been developed as housing complexes, some have been developed in other ways, but we are moving in a very systematic way, sir. Okay, Muralidharan ji. Sir, whether the government should consider these 50 acres land in Talasheri for the development of the railway. Members' suggestion is noted, sir. Deepak Ved ji.
मणिकम टेगोर जी. Sir, Railway launched Amit Bharat Station Scheme for the development of the stations. As the it's among 118 stations are among that thing, as the reply Honorable Minister has replied. Aspirational districts, is there any specific plan to include more stations in aspirational district? Because aspirational district is which are all backward districts, and we all know that there needs special support for that. And my district is an aspirational district, and Sivakasi and Arupukote stations are not included in this scheme. And I'd like to request the Honorable Minister, will he consider including Sivakasi, which is a fireworks hub, and Arupukote, which is a handloom hub, to be included in the Amit Bharat station scheme? Thank you, sir. जी, मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को आपके माध्यम से सदन के सामने रखना चाहूँगा। प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक काम हाथ में लिया है, एक तरीके से भागीरथी काम हाथ में लिया है। 1300 स्टेशंस का रीडेवलपमेंट एक साथ आज चल रहा है, और काम जिस तेजी से चल रहा है माननीय अध्यक्ष जी, देश में सौभाग्य मिला कई जगह स्टेशंस को ढंग से जाके देखने का। काम जिस तेजी से चल रहा है वो अपने आप में एक सुखदायक चीज़ है। आपके स्वयं के कोटा स्टेशन में भी अगर देखें, और देश भर में कई जगह, भुवनेश्वर देखिए, अलम्बुर देखिए, बिहार में देखिए, झारखंड में देखिए, उत्तर प्रदेश में देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए, सब जगह, जैसलमेर, उधमपुर, जब कई मान्यवर सदस्यों के स्टेशंस जो बन रहे हैं, बहुत ही तेजी से काम हो रहा है। 1300 स्टेशन का रीडेवलपमेंट का एक साथ इतना बड़ा प्रोजेक्ट विश्व में कहीं पर शायद नहीं लिया गया होगा। ये इतना बड़ा स्टेशन रीडेवलपमेंट का काम है, ये और अच्छा प्रोग्रेस हो जाए, इससे बहुत सारी लर्निंग्स भी आ रही है माननीय अध्यक्ष जी। जो प्रधानमंत्री जी का विजन है कि शहर के दोनों हिस्सों को जोड़े और एक बहुत अच्छा रूफ प्लाजा बने, नई अर्बन स्पेस बने, वो सब इस प्रोग्राम के माध्यम से साकार हो रही है। आई बी ईडन जी. सर, आपके माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहता हूं सर। आप इस प्रोजेक्ट के लिए आपके भी ग्रीन सिग्नल चाहिए सर। सर, आई हैव ऑलरेडी रेज्ड दिस इशू टू द ऑनरेबल मिनिस्टर. इट इज रिगार्डिंग 110 acres of land in my constituency in Ernakulam, which the Indian Railway owns. This is a marshalling yard, and as we all know that the Ernakulam town and junction railway stations have been in a stagnant position. And the only way to develop the railways in Kerala is to develop this particular railway station, where inside the heart of the city you have 110 acres of land. The Railway Land Development Authority, RLD, have made a study on this. A detailed project report has been made. I hope the Honorable Minister and the government would consider this matter very positively. Also, sir, what is the present status of the Shabari Rail project in Kerala? Is the government intending to take up the project, or government has dropped the projects? Honorable Speaker, sir, the Shabari Rail project is another classic case study in which after so many years of effort, because of the lack of cooperation from the state government, because of the lack of cooperation on land acquisition, lack of cooperation on giving the matching fund, the project has not really taken the kind of progress which it should have made. Right now we are working on two possible alternative alignments. One of the alignments actually takes the project railway line all the way very close to the Shabari shrine, and the other alignment basically terminates about 25 or 26 kilometers before the shrine. So once both the alignments are kind of fully examined, then only a final decision can be taken. And regarding the Ernakulam railway land, I'll request the honourable member to come and meet me. We can discuss what best use it can be put to. Kerala government is in Indie block. सर, मैं आभारी हूं सर कि आपने पूरे प्रश्न को पूछने की अनुमति दी। सर, मैं सबसे पहले तो अपने एसएसपी प्रधानमंत्री जी का और माननीय रेल मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। सर, मैंने लंबे काल से पार्लियामेंट में आने का मौका मिला। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद ये पहली सरकार है, 10 साल की सरकार,
इसने मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पर पूरे देश के स्टेशनों का पुनर्विकास करके कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया। दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। सर, मेरे संसदीय क्षेत्र में अमृत भारत स्टेशन के लिए सर एक स्टेशन का आपने पिछले बार चयन किया था सर, तरेगना स्टेशन का। सर, काम प्रारंभ हो गया है, थोड़ा विलंब से मगर काम प्रारंभ हो गया। मैं आपके माध्यम से ये अनुरोध करना चाहूँगा और जानना चाहूँगा, आपने पिछली बार अनुरोध के बाद आपने कहा था अगले वित्तीय वर्ष में मैं और आपके इलाके के स्टेशन को मैं पुनर्विचार करूँगा उसके डेवलपमेंट के लिए। तो मैं जानना चाहता हूँ सर, मेरे स्टेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण है दानापुर मंडल भी है सर, वहाँ पर बेटा, पुनपुन, सदिशोपुर, क्या इन स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन के अंतर्गत लाने की महती कृपा करेंगे ताकि बिहार का वो पटना का इलाका भी विकसित हो सके और लोगों का कल्याण हो सके। सर, माननीय संसद में प्रश्नकाल के समय हम पॉलिसी मैटर पे पूछें, अब एक एक स्टेशन पे सब पूछेंगे कैसे चलेगा? बताओ, पॉलिसी मैटर पे पूछे, एक संसद में प्रश्नकाल पर एक व्यापक हिसाब होना। मैं तो कई बार ये स्टेशन नहीं बना, वो स्टेशन नहीं बना, पैसेंजर घायल हो गया, पैसेंजर। चलिए मंत्री जी जवाब दो। मान्यवर सदस्य में प्रश्नकाल, संसद का प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण समय होता है और इस समय जो प्रश्न और उसका जवाब है उससे पूरा देश देखे कि क्या कुछ पॉलिसीज के अंदर क्या क्या हो रहा है, तो अच्छा लगेगा। मैं पहले तो मान्यवर सांसद जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस तरह से फील्ड में डिफिकल्टीज आई उसमें मान्यवर सांसद जी ने स्वयं इंटरवेंशन करके कई समस्याओं का समाधान किया, इसलिए मैं मान्यवर सांसद जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो बाकी नए स्टेशन और जोड़ने का आपने निवेदन किया है, मैं मान्यवर सांसद जी से निवेदन करता हूँ एक बार चाय पे बैठते हैं और जो यथासंभव आगे तो चेंबर में बात कर लेना। आप अरविंद सावंत जी। स्पीकर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। एक अच्छा कदम सरकार ने उठाया, उसकी सराहना करता हूँ। एक मुंबई में विक्टोरिया टर्मिनस का नाम हमने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस किया, आपने इसमें उसका भी प्रावधान किया, ऐसा मुझे समझ में आया है। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। एक ही दरखास्त है, विनती है, बहुत सालों से करते आया हूँ कि वहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू लगाएंगे। वो जवाब देते हमारे पास पॉलिसी नहीं है। केवड़िया पे वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैचू बनाया, म्यूरल भी बनाया हुआ है। विश्वेश्वरैया पे विश्वेश्वरैया का भी स्टैचू बनाया है। छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू अगर स्टेशन के सामने, उसकी जो गरिमा है उसको ठेस न पहुंचाते हुए बिठाने की कोशिश करनी है। मैंने उनको प्लान भी दिया, डिजाइन भी दी थी। आप अगर उसकी अनुमति देंगे तो बहुत बहुत शुक्रिया। माननीय अध्यक्ष जी, छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के ऐसे गौरवशाली, ऐसे ऐतिहासिक युग पुरुष रहे जिन्होंने इस देश के इतिहास में अपना नाम एक बहुत ही गौरव, बहुत ही स्वर्ण अक्षरों में रखा है। हम लोग तो बचपन से शिवाजी महाराज की कथाएं पढ़ते पढ़ते बड़े हुए। उस स्टेशन का, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने में कोई भी कसर नहीं रखी जाएगी। काम आरंभ हो गया है और ऐसा मान्यवर अध्यक्ष जी काम का जो डिज़ाइन हुआ है, मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि उस डिज़ाइन को जैसे कंप्लीट होगा ये काम आरंभ हो चुका है, लोग स्टेशन को देखने के लिए आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। क्वेश्चन नंबर 67 श्री पशुपतिनाथ सिंह जी। एक विशेषता थी कि कोई भी अगर उनको धोखा देता था तो वो उससे पूरा बदला भी लेते थे। पशुपतिनाथ सिंह जी। प्रश्न संख्या 67 पूछता हूँ। माननीय मंत्री। laid on the table of the house, sir. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सर्वप्रथम तो मैं माननीय मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई दूंगा कि आज़ादी के बाद 2014-65 वर्षों में कोयला का उत्पादन 462 मिलियन टन प्रतिवर्ष होना शुरू हुआ था और आज 10 वर्षों में वह दुगना से अधिक हो गए। 893.19 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन होना शुरू हो गया
देश के समृद्धि में कोयले का बहुत बड़ा योगदान होता है। जब यह रिकॉर्ड उत्पादन शुरू हुआ तब ओबी डंप की समस्या आई, क्योंकि ज़्यादा ओपन कास्ट से कोयला निकालकर और बड़े बड़े पहाड़ बना दिए। समय 12 बजने वाला है, इसलिए शॉर्ट पूछ लेंगे तो जवाब दे देंगे। एक तो बहुत मुश्किल से अध्यक्ष महोदय, कई बार कोशिश किया। नहीं, मैं तो आपके हित के लिए कह रहा हूं, अगर आप शॉर्ट पूछ लो जवाब दे देंगे। बहुत संक्षिप्त में है। हाँ, बहुत संक्षिप्त में है, मैं बात भी करता हूं बहुत संक्षिप्त। अब ओबी डंप की समस्या भौगोलिक की स्थिति बदल दिया कोलफील्ड का। कहीं तालाब हो गए, कहीं पहाड़ हो गया, और वहाँ कोयला में आग लगी हुई है, विस्थापन की समस्या है। राज्य सरकार इनको जमीन उपलब्ध नहीं करे। हमारा प्रश्न है कि यह नियमानुकूल है कि कोई रहती लैंड कोई देता है, अधिग्रहण होता है, तो कोयला उत्पादन करने के बाद उसको समतल बनाकर और उसको वापस कर दिया जाए। क्या इस पर सरकार विचार रखती है? सर, जैसे मान्य सदस्य ने उल्लेख किया कि कोयला प्रोडक्शन के बारे में उन्होंने उल्लेख किया है, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, जो हम लगभग 500 मिलियन टन, 550 मिलियन टन से ज़्यादा उत्पादन 2013-14-15 में होता था, जब मोदी जी आने के बाद हम अभी इस बार 1 बिलियन टन क्रॉस कर रहे हैं। सर, वी आर क्रॉसिंग 1 बिलियन टन, दैट इज 1000 मिलियन टन। मैं ये भी आश्वस्त करना चाहता हूँ कि देश कोयले में पक्का जो सब्स्टिट्यूएबल जो कोल है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूएबल जो कोल है, उसमें आत्मनिर्भर हम बनेंगे, ये भी मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ। इसके साथ ही साथ जो ओबी रिमूवल जो है, ओबी बर्डन जो है, तो एक इशू है, लेकिन इसके लिए जो रेगुलेटरी सिस्टम है और रेगुलेटरी सिस्टम इन प्लेस है। डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी तो रेगुलर इंस्पेक्शन करते हैं ओबी डंप्स का, उसका ज्योमेट्री कैसा है, स्लोप स्टेबिलिटी राडार भी, इसका भी उपयोग कई जगह हो रहा है, लेकिन पूरा उसका फ्लैटनिंग करके रिफिल करके हमको वापस करने का पॉलिसी आज के दिन में हमारे नहीं है, क्योंकि उसके एक बार ओपन कास्ट में माइनिंग पूरा करने के बाद रिफिल करने के लिए, और रिफिल करने के बाद वो नीचे गिरता है, इसके कारण बहुत समय लगता है। और उसमें हमने इको पार्क बनाया है, उससे जो सैंड उत्पन्न होता है, बालू, वो बालू हम उसका उपयोग कर रहे हैं। और उसे ये भी हम कंसिडर कर रहे हैं सोलार पार्क, जो अभी ओबी साइड जो है उसका सोलार पार्क भी उसके ऊपर लगाने का कंसिडरेशन में है। तो ओवरऑल तो जो लैंड कैसे उपयोग करें, इको पार्क कैसे करें, ये सब सोच रहे हैं, लेकिन ये रिस्की रहता है, इसीलिए फ्लैटन करके वापस करने का अभी तो सोच सरकार के सामने नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68 के सुरेश जी। सर, क्वेश्चन नंबर 68 स्टेटमेंट। आप 1 सेकंड में पूछो, 1 सेकंड में जवाब। ऑनरेबल स्पीकर सर, आप पूछ ले, कोई बात। Sir, first of all, I would like to congratulate you, Honorable Railway Minister, to take up various railway stations for redevelopments. Sir, in my constituency, Mavelikara, also included in the Amrit Park scheme, the tender has been floated. Unfortunately, that tender was cancelled. Now the work has been delayed. So I would like to ask the Honorable Minister when this work will be restarted. And also, Chenganur is the gateway of Shabarimala. That railway station also included the second phase of the redevelopment, but work has been not taken up. These two important questions, Honorable Minister, kindly reply. Honorable Speaker, sir, Honorable member has asked a very specific question about the Mavelikara railway station. Unfortunately, the first tender which was awarded, that was not performed, and the tender had to be cancelled. Already a fresh tender has been issued, sir. सप्लीमेंट्री चलो।
there is a proposal from Chenganur to Pamba, elevated railway line. So, what is the present situation? Whether the survey is over, alignment has been finalized, the project has been approved by the railway board. When this railway line will be started the work? Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji is fully committed towards development of railway network in Kerala, and one of the projects which is very important is the project which takes the railway network to the holy shrine of Sabarimala. The Chenganur to Pamba railway line is a new alignment which has been suggested by Dr. E. Sridharan Saab. The DPR is right now under preparation, sir, and as and when the alignments are frozen and DPR is completed, then the next steps will be taken. Okay, प्रश्नकाल समाप्त। माननीय सदस्यगण, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने प्रस्ताव किया है कि आवश्यक सरकारी कार्य को निपटान हेतु 7वीं लोकसभा के 15वें सत्र को शनिवार दिनांक 10 फरवरी 2024 तक के लिए बढ़ा दिया जाए। यदि सभा की अनुमति हो तो शनिवार 10 फरवरी 2024 तक सदन की बैठक निर्धारित की जाए, बढ़ा दिया जाए। मुझे कुछ माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना की अनुमति नहीं दी गई है। आइटम नंबर 2, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं आपकी संशोधित कार्यवली में क्रम संख्या 2 के आगे मेरे नाम पर सूचीबद्ध कागजात सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद सभापति महोदय। आइटम नंबर 3, फगन सिंह कुलस्ते। महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम पर उल्लेखित कागजात सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 4, श्री राव साहेब दानवे। सभापति महोदय, मैं आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 4 पर उल्लेखित कागजातों को सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 5, साध्वी निरंजन ज्योति जी। सभापति महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत करती हूँ। आइटम नंबर 6, श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल। सभापति महोदय, आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रम संख्या 6 पर मेरे नाम के समक्ष उल्लेखित दस्तावेज मैं सदन के पटल पर रखती हूँ। आइटम नंबर 7, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। धन्यवाद सभापति महोदय। लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 7 पर अंकित दस्तावेज जो श्री राजीव चंद्रशेखर जी फॉर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम के आगे अंकित है, आपकी अनुमति से मैं सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 8, श्रीमती दर्शना जयदोष। Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House papers mentions against my name at serial number 8 of the Ministry of Textiles as the today's revised list of business. आइटम नंबर 9, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। धन्यवाद सभापति महोदय। लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 9 पर श्री वी मुरलीधरन जी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से संबंधित कागजात उल्लेखित है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 10, श्री सोम प्रकाश। Sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House paper listed against my name at serial number 10 in the revised list of business for today. आइटम नंबर 11, श्री देबू सिंह चौहान। धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची की क्रम संख्या 11 पर मेरे नाम के समक्ष उल्लेखित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 12, डॉक्टर संजय जायसवाल। सभापति महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में अपने नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन संख्या 37 हिंदी और अंग्रेजी संस्करण को प्रस्तुत करता हूँ।
Item number 13, Sri Adhir Ranjan Chaudhary. Sir, I rise to present the report number 83, 84, 85th, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, and 103rd Indian English versions of the Public Accounts Committee 2023-24 as listed against my name in today's revised list of business at serial number 30. The PSC has completed a century. Credit goes to the chairman. Item number 14, Bhavna Gavli. पति जी, मैं आज के कार्यसूची पत्र में क्रम संख्या 14 पर मेरे नाम के समक्ष यथा सूचीबद्ध सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का 13वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करती हूँ। Item number 15, PC Gadegora ji. With your kind permission, I rise to present a copy of the each 67, 68, 69 and 70th report, Hindi and English versions of the Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing 2023-24 as listed against my name at serial number 15 in today's list of business. Item number 16, Sri PC Gadegowdar ji. Sir, with your kind permission, I rise to lay a copy of each of the statement, Hindi and English versions, showing action taken by the government on 62nd report of the Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing, as listed against my name at serial number 16 in today's list of business. Item number 17, Sri PP Chaudhary ji. Sir, with your permission, I present the following reports, Hindi and English versions of the Committee on External Affairs 17 Lok Sabha. Number 1, 29th report on action taken by the government on the observations, recommendations contained in the 24th report of the Committee on External Affairs on the subject, India's policy planning and role of think tanks with special reference to ICWA and RIS. Second, 30th report on action taken by the government on the observations, recommendations contained in the 22nd report of the Committee on External Affairs on the subject India's neighborhood first policy. Item number 18, Srimati Lockett Chatterjee. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. I beg to present the 39th and 14th reports, Hindi or English versions of the Standing Committee on Consumer Affairs, Food and Public Distribution as listed against my name in today's list of business. Thank you. Item number 19, Sri Radha Mohan Singh ji. क्रम संख्या 19 पर मेरे नाम के सामने यथा सूचीबद्ध रेल संबंधी स्थायी समिति के विवरणों को सभा पटल पर रखता हूं। Item number 20, Sri Pallav Lochan Das ji. Sir, I am to present the 53rd, 54th, 55th, 56th, 57th and 58th report, Hindi and English version of the Standing Committee on Labour, Textile and Skill Development as listed against my name, serial number 20 in today's order paper. Item number 21, Sri Pallav Lochan Das ji. Sir, I rise to lay 6 statement Hindi and English version of Standing Committee on Labour, Textile and Skill Development as listed against my name, serial number 21 in today's order paper. Thank you, sir. Item number 22, Sri Raghuram Krishna Raju. Thank you, Honorable Chairman, sir. I beg to lay on table a copy each of the following reports in both Hindi and English versions of Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice. 141st report on the subject Judicial Infrastructure in the Northeastern States of India. 142nd report on the subject Strengthening Legal Education in View of Emerging Challenges Before the Legal Profession. 143rd report on the subject Review of the Working of Legal Aid
under the Legal Services Authorities Act 1987 and 144th report on action taken on 133rd report of the committee on the subject judicial processes and their reforms pertaining to Department of Justice, Ministry of Law and Justice. Thank you, sir. Item number 23, Dr. Jitendra Singh. Permission, I rise to lay on the table of the House a statement regarding 1. The status of implementation of the recommendations contained in the 326th report of the Standing Committee on Science, Technology and Environment, Forests and Climate Change on demands for grants 2020-21, demand number 03 pertaining to the Department of Atomic Energy. 2. The status of implementation of these recommendations contained in the 334th report of the Standing Committee on Science, Technology, Environment, Forests and Climate Change on action taken by the government on the recommendations observations contained in the 326th report of the Committee on Demands for Grants 2020-21 pertaining to the Department of Atomic Energy. Number 3, the status of implementation of the recommendations contained in the 341st report of the Standing Committee on Science, Technology, Environment, Forests and Climate Change on the demands for grant 2021-22, demand number 03 pertaining to the Department of Atomic Energy. Thank you, Speaker, sir. Item number 24, Sri Rao Sahib Danve. सभापति महोदय, मैं कोयला मंत्रालय से संबंधित कोयला आयात प्रवृत्ति और आत्मनिर्भरता का मुद्दा 2022-23 के संबंध में विभाग संबंधित कोयला, खान और इस्पात संबंधी संसदीय समिति के 37वें में अंतरिक्ष परिषद के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में वक्तव्य दे रहा हूँ। Item number 25, Sri Som Prakash ji. Respected Sir, with your kind permission, I rise to make a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in 182nd report of the Standing Committee on Commerce on Ecosystem of Startup to Benefit India pertaining to the Department of Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry. Thank you. धन्यवाद श्री अजय भट्ट जी. Item number 26, Sri Ajay Bhatt ji. Okay. Arjun Ram Meghwal. Sir, Honorable Chairman, sir, with your kind permission, I rise to make a statement on behalf of my colleague, Sri Ajay Bhatt, regarding the status of implementation of the recommendation contained in the 35th, 36th, 37th and 38th report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Defence relating to the demand for grants, that is demand number 19, 20, 21, 22 of the Ministry of Defence for the year 2023-24. Thank you. Dhanyavad. Honorable members who have been permitted to raise matters under Rule 377 today may personally hand over approved text of the matter at the table within 20 minutes. Now we take up item number 28 से 33 तक एक साथ. Now Dr. Shashi Tharoor ji. Minister, sir? Where's Minister, sir? Where? What is this, sir? Please, we cannot start this, sir. What norms are you sending? Where is the Union Minister? Where is the Union Minister? You are starting up, but ये क्या दिखाना चाहते हैं, sir? You walk out otherwise, sir. What is this, sir? ये क्या है, sir? Union Minister नहीं है बजट में, ये क्या दिखाना चाहते हैं? Where is the Union Finance Minister? Shame on this government, sir. Shame on this government. They making a mockery. प्रहलाद जी, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, इतने वर्ष सरकार चलाने के बाद इनको इतना एलिमेंट्री नॉलेज नहीं है कि सरकार की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. यहाँ इतने सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स बैठे हैं. पंकज जी हमारे वरिष्ठ MOS है फाइनेंस के, उसके बाद इस प्रकार की बात उठाना दिखाते हैं कितना खोखला हो गया है कांग्रेस की सोच. But here, it should go on record, sir. Premchandran ji. It should go on record. Premchandran ji. Sir, the House is run by precedents and conventions. The convention of this Lok Sabha, the tradition of the Lok Sabha,
when the general discussion on the budget takes place, normally it is the courtesy on the part of the Union Cabinet Minister to be present in the House. It is quite unfortunate that the minister is absent. It is quite unfortunate. Sir, the same. I am pleading for the courtesy convention protocol. That should be maintained. Parliamentary affairs. No. Okay, let me. Sir, it is. Let us not have a debate. Let us not have a debate. Already the government has taken note of it, and the MOEC is competent enough. But no, that is not the case. That is not the case. That is not the case. Allow Dr. Shashi Tharoor to speak. Dr. Shashi Tharoor. Dr. Shashi Tharoor, please. Parliamentary affairs Let us is not taking the role seriously. Sir. Dr. Shashi Tharoor ji. Sir, I join my colleagues in deploring the absence of the Honourable Finance Minister. No, she's not absent. Who had actually introduced the interim budget She's coming, last week. already it has been But I coming. will nonetheless initiate the debate on behalf of my party. The budget comes at a very crucial moment for our country. We are shortly heading to the polls to decide who should lead the nation. But on what basis will the people come to this decision? Because when in 2014 they did offer a mandate to this current ruling dispensation, they did so with the hope that the government would come through on its bloated rhetoric of Sabka Saath, Sabka Vikas, the illusory promise of inclusive development for all Indians. Now, fast forward 10 years later, sir, and we find the people of this country have been sadly betrayed by a government whose economic mismanagement in this past decade has left the people of India staring at widespread distress, hardship, low incomes and high unemployment. Now, the first glimpse of their economic ineptitude came with the reckless decision of demonetization that broke the back of the Indian economy and resulted in a monumental disaster where poor and middle-class citizens suffered and in several cases even died while waiting in long lines to convert their notes, while the wealthy friends of the government managed to exchange their currency with ease. We must also not forget the sudden no-notice lockdown of 24 March 2020, imposed without warning or planning, which led to lakhs of migrant workers walking, trudging thousands of miles, kilometers back to their homes. During that national lockdown, sir, the most stringent in the world, between April and May 2020, individual income in India dropped by 40%. The bottom 10% of households lost 3 months' worth of income. Over its first 2 terms, this government demonstrated that its specialty was to issue policies marked by haste, incompetence and complete disregard for its own citizens. Just 1 minute. The House has taken up the discussion and voting on demand for grants on account for the year 24-25. Sri Suresh Kodinunil and Srimati Aparupa Podar have tabled cut motions on the demand for grants on account. If the honourable members want to move their cut motions, they may send a slip at the table within 15 minutes, indicating the serial number of the cut motions they would like to move. A list showing the serial numbers of cut motions treated as moved will be put up on the notice board shortly thereafter. In case the members find any discrepancy in the list, they may kindly bring it to the notice of the officer at the table immediately. Now proceed, Dr. Sir. I'll resume, sir, where I left off and welcome the Finance Minister to this House. If demonetization was a bad policy, badly implemented, GST was a good idea, badly designed and shabbily implemented. The goods and services tax has been used to trample over the financial autonomy of our states, and when coupled with demonetization, it resulted in finishing off India's job-generating small, micro and medium businesses. It caused a 45-year unemployment high and ended the economic recovery that had begun in 2013, all while failing to achieve any of its stated objectives. Ordinary Indians have suffered, sir. Even the GST tax slabs on basic commodities like toothpaste, 5%, footwear, 18%, shirt and pants, 5%, rice and wheat, 5%. Instead of flushing out black money, it simply resulted in concentrating wealth in the hands of the government at the expense of the Aam Aadmi. So any talk of a robust economy and of GDP growth
cannot be abstract or theoretical, but must be rooted and centered in the welfare of the people of India, who are the principal stakeholders of our economic progress. The question is, who are the people the government is serving? The finance minister mentioned 4 quote-unquote castes that the government supposedly looks after, namely the Garib, poor, Mahilaye and women, Yuva, youth, and Annadata, farmers. She said that their needs and aspirations and welfare are the government's highest priority. However, all 4 groups are some of the worst performing groups in the most categories you can find for social and economic policy performance. Let's begin with the Yuva. There is a tragic irony in the government's claims of success when desperate young people are queuing up to risk their lives in Israel in the middle of a war because they have no decent work in India. The unprecedented levels of unemployment have left countless citizens, especially our young workforce, with few prospects for a brighter tomorrow. Overall, an unemployment rate of 8 to 9% has become the new normal in our country. Unemployment reached a 45-year high in 2017, currently stands at 7.3% according to CMIE data, but has crossed 8% just a few months ago. Worse, the unemployment rate amongst youth aged 20 to 24 stood at 45.4%, sir, in 22-23. The Indian economy actually employs fewer people today than it employed in 2012. The data we have actually for the government is only 2018 and 2012, but that's where we have it. We employ fewer people. Agriculture and manufacturing jobs have gone down. Financially precarious construction work and low-end service roles are the only ones where they've seen any sort of employment. No wonder people are so prepared to risk their life and limb for a job in Israel, risking dying to make a living, sir. That's what our young people have been reduced to. Periodic labour force survey data shows that regular salaried employment has stagnated for 5 years. Talk of self-employment, which the government does, is a cop-out, because most of the self-employment is unpaid family labour, which is disguised unemployment. Experts reckon that the growing army of self-employed in any case constitutes very low-quality employment, and unpaid workers have increased from 40 million in 2017 to 95 million last year. You can call them self-employed, but unpaid workers are not counted as employed by the ILO, the International Labour Organization. Now, the share of agriculture in total employment has gone up, which is an indication that there are not enough jobs available outside of agriculture. To this, the government offers schemes like Skill India as a palliative. Skill India has set out a goal of skilling 40 crore workers by 2022, but if you look at the grand total trained under the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, it is 1.3 crore, not 40 crore. And of that 1.3, only 24 lakh people have been placed in jobs. Skill India has been a failure, sir. The workforce share that was formerly vocationally educated trained in 2012 was 2.3%. In 2023, after 10 years of this government, the share has gone from 2.3 to 2.4%. What should we say? Congratulations. All this crying about Yuva Shakti. The truth is that their future looks bleak, sir. The Affairs Minister is disrupting the Finance Minister. Sir, here is one landed member speaking, please. The Finance Minister doesn't wish to hear any uncomfortable truth, sir. This is pre-planned, sir. This is pre-planned. Please. The young people of our country are facing a double whammy. Falling labour participation rates and shockingly high unemployment, as I've just described, while the minister was otherwise occupied. Government praises the start-up culture as an alternative, but fund-starved start-ups fired nearly 18,000 people in 2022. Start-up fundraising activity is so subdued, sir, that in all Indian startups put together raised just $1.1 billion in January, down 75% compared to January of the previous year. Let's turn to MSMEs. They've been the main employment generators in this country, but they also find themselves shrinking in today's economy. Many were permanently closed after the disastrous demonetization. In 2016, we had 6.25 crore MSMEs. The number has dwindled to now 3.25 crore, as per the government's own Udayam portal, the MSME registration portal. More than 60% of the conventional micro-enterprises in our country
which were engaged in business activities for more than 10 years, have perished. They've been closed, sir. So that's the picture we are seeing. What is the stage of employment generation? We have to ask the government, kiska saath or kiska vikas? The question again brings me to yet another aspect of the government's underperformance, woefully ignored in the Honourable Finance Minister's speech. She said people are living better and earning better. Average real income, she said, has increased by 50%. But first, there's no data available on individual household income. So how does the government say it's increased by 50%? If she's merely talking per capita GDP, sir, that is not a valid comparison, as per capita GDP will go up on the basis of people who are rich at the top of the pyramid without actually affecting the incomes of those at the bottom. If Mr. Adani and Mr. Ambani walked into this chamber right now, every MP would discover that our per capita income has gone up. Right? But the moment they leave this room, we would all revert to reality. That's the problem with using per capita as her guide. A critical appraisal reveals that technically some incomes have gone up on per capita basis, but if you're middle class, lower middle class or poor, your incomes have shrunk. That's the inequality in our country today. There's a Reuters survey this month, sir, stating that over 85% of the interviewed families reported stagnant or lower incomes compared to the years before the pandemic. Post-pandemic, the poorest 20% households in India saw income levels shrink 52% from their 2015 levels. And this is as per the latest India's Consumer Economic Survey. Compare this with the pre-2014 period that the Finance Minister put so much effort to discredit. During UPA 2, 2009 to 14, real agriculture rural wages grew at 8.6%. In contrast, during NDA 1, growth of real farm wages decelerated to 3.3%, and under NDA 2, the annual growth rate of real rural wages has become negative, sir. Can you give the exact thing? Agriculture wages minus 0.6%, non-agricultural minus 1.4%. So rural India is suffering reduced income, sir. Overall, when you compare income growth by income group from 2016 to 2022 in India, the top 20% of the rich have seen almost a 40% rise in their income growth, while the bottom 60% of our population have all seen negative income growth. There's also been a sharp fall in household savings because real incomes have declined. So let's look at the Garib. I'm looking at each of these castes, quote-unquote, that she mentioned. The government claims it made 25 crore people free from multidimensional poverty in the last 10 years. Now, that claim has to be interrogated. First, if 25 crore have indeed been freed from poverty, why are 81 crore still receiving free food grains? Second, how is the government expecting us to trust their number when consumption expenditure surveys were not done from 2014 onwards to 2022, and the National Multidimensional Poverty Index has been attacked by experts here and abroad who question both the manner and methodology with which it is calculated? The truth is the government's record is disillusioning. The UPA era created the fastest ever decline of poverty levels in India's history between 2005 and 15, whereby 271 million or 27.1 crore Indians were lifted out of poverty, providing what UNDP called the greatest relative development for the poorest 40% during this period. Under the BJP, I'm still quoting international sources, 230 million Indians or 23 crore slipped into poverty during the pandemic, and according to the World Bank, an astounding 80% of the world's people who slipped into poverty in 2020 during the pandemic were from India. 80% going below the poverty line were from India. But there's worse. The National Survey Organization has not conducted its quinquennial national consumption expenditure surveys to identify the proportion of people below the poverty line. The global poverty line at one point was $1 a day, now it's $2, according to World Bank and UN figures. But in India, despite all the government's tall claims of growth, the official national poverty line is very low, at rupees 1,286 per month per person in urban areas and 1,059 per month per person in rural areas. Has the government raised 25 crore people above these levels? There's no indication. The Indian government has conducted no survey, neither a national consumption expenditure survey and, of course, no national census either. We are in a statistical void, and what we only have is this multidimensional poverty index of the Niti Aayog, which is a new index they have created
which cannot be compared with any past poverty numbers. We have absolutely no basis for judging whether poverty has actually gone down, as the finance minister claims. As we all know, on issue after issue, NDA apparently stands for no data available. Now, one of the greatest disservices that this government has done to India is that a country which enjoyed a global reputation for reliable statistics is no longer trusted on its numbers, from COVID death claims to real-life economic indicators. These are really horribly disenchanting figures that seek to mask but in fact reveal the government's mismanagement of our economy. The finance minister calls inflation moderate, but the fact is he's not acknowledging that the Indian middle class and poor have been left defenseless in the face of rising inflation. Retail inflation measured by the CPI rose to a 15-month high of 7.44% in July 2023. But a recent survey by the data analytics firm Kantar found that 57% of Indians are worried about rising inflation. Look at wholesale market prices from December 2023, just a month ago, 19.6% higher when compared with the same month the previous year. Paddy became costlier by 10.5%, milk by 7%, vegetables by 26.3% year on year. And this is linked to growing nutritional concerns. The State of Food Security and Nutrition in the World report, another unimpeachable international document, says that a significant 74.1% of India's population cannot afford healthy food. This translates to over 100 crore people in India facing a crisis of inadequate nutrition, and it's a distressing number that is substantiated by our dropping to the 111th rank out of 125 countries in the 2023 Global Hunger Index. Even in the latest interim budget speech, the finance minister spent a lot of time celebrating the success of GST amassing a lot of revenues. But her speech was not punctuated this year with any verses or shairis, not even from Tiruvalluvar. So I prompted a poet friend of mine to put the plight of the suffering it caused the Aam Aadmi into verse. And I'd like to share it with her to italicize the really sad state of the Indian economy from the point of view of a common man like this Kavi. कर्ज के बोझ से आम आदमी तर-तर हो गया, महंगा हो गया खाना पीना, महंगा घर हो गया। मंत्री जी के बजट की खामी हम बतलाते हैं, सिर से करके शुरू, चलो पैरों तक जाते हैं। कुछ चुनिंदा यारों के बड़े बंगले हो गए, बालों से पैरों तक आते हम कंगले हो गए। माना आप डाई नहीं करते, पर कहीं तो करते हैं। इतनी महंगी हो गई डाई कि लगाने से डरते हैं। चश्मे के दामों को सुन, आंखें रो गई। कम लगाओ टूथपेस्ट, पेस्ट भी महंगी हो गई। बाल कटाने से भी हम अब कटने लग गए, बिना क्रीम के हाथ पैर भी फटने लग गए। फट गई कमीज की कॉलर, पर नहीं तो नहीं ले नहीं सकते। जीएसटी इतना ज्यादा है हम दे नहीं सकते। पूछ रहा था कोई, हम वजन कैसे घटाते हैं? जब से सब्जियों के दाम बढ़े हम कम से खाते हैं। दिखा के लॉलीपॉप वो भरमा कर चले गए। इस बार भी वो अपने ही गुण गाकर चले गए। कैसे सोच लिया कि जनता फिर से माफ करेगी? कैसे सोच लिया कि जनता फिर से माफ करेगी? इस बार चुनावों में जनता जड़ से साफ करेगी। That, sir, is the plight of the Aam Aadmi. Others who can are voting with their feet. The External Affairs Minister told Parliament that over 16 lakh Indians gave up their citizenship, including 2,25,000 in 2022 alone. High net worth Indians are leaving the country because of this government's tax terrorism. 7,500 millionaires left India in 2022, 6,500 last year. They have taken their resources to invest them abroad and not in our country, where private investment is seriously down under the NDA government. The FM's claims of human development don't stand the test of objective scrutiny either. She claimed
that a large number of new institutions of higher learning, especially AIIMS, IITs, IIMs, are being set up. As I've said in the House innumerable times, the problem with this government is not ideation. It's the delivery of public services and the implementation of grand policy announcements. In this case, too, the government has failed to ensure proper execution. Look at the AIIMS, for example. In some cases, only land is allotted. Nothing is done beyond that. Sometimes even that clearance takes years. In Madurai, the approval to construct an AIIMS came 5 years after the PM laid the foundation stone in 2019. In my own state of Kerala, we are still waiting for the establishment of an AIIMS to boost the quality of medical services for our residents. In other cases like AIIMS Bhubaneswar, posts are lying vacant and nothing has been operationalized. Now, another major axis of the government's self-congratulation was the efficacy of its various schemes for the poor. They're very nicely named and so on. But that too is a delusion that requires a sobering reality check. In the last fiscal year for which we have numbers, 90 lakh beneficiaries of the government's flagship Pradhan Mantri Ujjwala Yojana did not refill their cylinders. Data revealed through an RTI showed that of the 9.58 crore PM Ujjwala Yojana households, 1.8 crore brought no refills, while another 1.51 crore bought just one refill. But the government does nothing to make the cylinders more affordable to ordinary people. It's all headline management, bottom line mismanagement. In fact, most of the government's successes actually let down. Jan Dhan, 51 crore Jan Dhan accounts were created, but over 20% of them are inoperative as of December 23, last month, just a month ago. Nearly half the inoperative accounts belong to women. So much for Nari Shakti. Ayushman Bharat, in August 2023, the CAG found that 43,000 crore had been misappropriated in the Ayushman Bharat scheme. Manrega, which the Prime Minister had disparaged in his first Lok Sabha speech of 2020 or 2014. Demand for Manrega continues to be higher even than pre-COVID levels, despite the low wages being given and the various bottlenecks in accessing the scheme. Between April and December 2023, just the last 6-month phase, a record 231.34 crore person days were generated across all states, at a time when the government had drastically reduced the budget for the scheme by 33% in the last budget. They then had to seek supplementary funds of 16,000 crore in December. If the economy is so good, if jobs are so plentiful, why did the revised estimate for Manrega 2023-24 increase by 43% compared to the budget estimate? Let's turn to the Annadatta. Close to 689 lakh farmers enrolled under the Fasal Bima Yojana during the 2023 season. Claims were only paid to 7.8 lakh farmers. Shame. Are you supporting your applicants or not? The number of beneficiaries enrolled under the PM Kisan Samman Nidhi Yojana decreased from 11.84 crores in 2019 to 3.78 crores in 22, marking a 67% decline, sir. And CAG tells us over 3,000 crores were reportedly siphoned away from the PM Kisan scheme through the creation of fake beneficiaries using publicly available Aadhaar details. In fact, the total expenditure to the Ministry of Agriculture and schemes related to farmers' welfare has been declining as a percentage of the total budget outlay since 2019. And during this government's period from 2014 to 2022, at least 1 lakh farmers have committed suicide, as per recently released National Crime Records Bureau report. This amounts to a scary 30 suicides per day, every day that BJP has been in power, sir, in the last 9 years. The Prime Minister's promise to double the income of farmers between 2015 and 2022 lies in shambles. They've stopped repeating it. The headlines were made at one time, now they've not been repeating it or fulfilling it, sir. The issue has disappeared completely from policy making, while the real incomes of agricultural households from cultivation has fallen, as I said, by 1.4%. Now, the Finance Minister also made a big deal about the blue revolution in the fishery sector, a sector where the government actually doesn't have much to boast about. I can tell you because most of the fishermen in my constituency are living below the poverty line, and the budget allocation for the sector has been raised for the entire country by a meager 134 crore. The government claims to have doubled pisciculture and aquaculture. Absolutely no evidence of this. And the PM himself talked about creating a Ministry of Fisheries, but they've only created a Department of Fisheries, which is part of a larger ministry.
I've never heard of a government that actually breaks its own promise and then claims credit for it. They have promised a ministry for 2 successive elections. They have never given a full ministry to the fisher folk and our coastal regions. The rhetoric surrounding Nari Shakti for the Mahila also requires additional debunking to what I've already said earlier. While we in the opposition welcome the women's reservation law, we are deeply sceptical about the vague timeline of the government, but equally representation is not enough in isolation. We know that grand announcements alone don't help women. We need policies that will help them get the resources they need. Consider, for example, the Integrated Child Development Services. You've rebranded it, of course, your phraseology is always great, Saksham Anganwadi and Poshan 2.0. But your budget for integrated child development has actually declined, even while new labels are coming. We have gone in the course of the Modi government's existence to reduce money available for child development. Similarly, while the government's claims of an increase in the number of women participating in the labour force tries to paint a positive picture, the truth is that the rise has only been post-pandemic because women had dropped out of the force during the pandemic in very large numbers, and women are doing tedious, low-paid or unemployed work. I beg your pardon, unpaid work, which is technically unemployment in this country. India ranks 127 out of 146 countries in the Global Gender Gap Index 2023, a searing indictment of our inability to provide the space that our women need to survive and thrive in the labour force. So much then for all the claims of empowering the Garib, the Mahilayen, the Yuva, the Annadata. Contextualizing the FM's budget speech in the highly competitive global environment yields even more evidence of policy failure. Dr. The Finance Minister argued that India's economic development has been good, even... I'm sorry? You have already completed 25 minutes. 5 minutes more, sir. I'll quickly wrap up. The Finance Minister has argued that India's economic development has been good, even as GDP growth averages a modest rate post-COVID. Our post-COVID growth has actually been lower even than Bangladesh, Vietnam, and even until very recently China. So what worries me more is the sharp uptick in the gross debt to GDP ratio, which has invited concerns from the IMF that I hope the Minister will address. The government has also missed its disinvestment target for the 5th year in a row. I'm just summarizing my last few points for you, sir. The trend of rising governmental debt in the last 10-year period has been very worrying because high debt, accompanied by low employment and high food inflation, is the worst possible scenario for our country, for the ordinary people of our country, and for any emerging market to attract investments. Fiscal deficit averaged 4.63% under our UPA government. It's averaging 5.13% under the NDA. I'm not going to go into details about that because fiscal deficit is not at the moment our biggest concern. But since the Finance Minister talked about it and FDI inflows doubling and so on by comparison with UPA, I just want to say it's a blatantly misleading assertion because FDI inflow as a ratio of GDP peaked in 2007-8 at around 3.6% and has never regained that level. Net FDI to GDP ratio today is only 1%. And the fact is that hardly any greenfield investment money has come in. RBI estimates that foreign investment today stands at $42 billion in 22-23, which is about the same as in 2008-2009, 15 years ago under UPA. Over those 15 years, foreign investment has come down in terms of a percentage of GDP, whereas Vietnam, for example, has close to 4.5% of GDP in their example. And gross FDI into India in the first half of the current financial year, April to September, was just $10 billion. The last time it was lower than this was in the first half of 2007-2008, sir. And the Finance Minister hasn't given us any cost-benefit analysis of the production-linked incentive scheme for which so much money has been spent. Where is the employment generation happening, Madam Minister? There is an absolute need for mid-course corrections, and she will have to answer this question. Internally, meanwhile, sir, our states are in turmoil because transfers to states have been reduced substantially. We know right now in Jantar Mantar there's a protest going on with many states protesting the way in which amounts have not been transferred. The current allocation of 3,67,000 crores in budget 22-23 already sees a gap of almost 6,000 crores in the revised estimates, and there's been a further decrease in the coming budget to 3,59,000 crores.
Devolution of tax revenues is a problem because the states have only been getting 30 to 33% in the last 5 years, a far cry from the 15th Finance Commission's recommendation of 41% and a reduction from the 42% given by the 14th Finance Commission. And the fact is the share of cesses and surcharges, which the government doesn't need to share with the states, keeps going up. It's now, it was 8.16% of gross tax revenue under our peak, but under this government, the number has tripled to 28.08% of gross tax revenue in the last fiscal year. So I just want to say there's a rising trend in CapEx, and we all have applauded that in the past, but the fact is the government seems to believe in trickle-down economics. Spend money at the top, somebody will benefit down below. We believe in trickle-up, sir. That is, if our economy produces the things that people wish to consume at affordable prices, the Aam Aadmi will not only live better, but will become a full participant in the economy. Our objective should be to make ordinary people into consumers and stakeholders in India's economic prosperity, but our government does not see them at all in just focusing on capex. Finally, sir, the finance minister reserving an amount of 11,111,111 crores for capital expenditure shows there's nothing particularly scientific about the calculations in a budget. A minister who chooses a lucky number is heading an economy that needs all the luck it can get, sir. There is no question that when she says that GDP stands for governance, development and performance, GDP, as I've pointed out through my speech, the fact is it's not equitably enhancing the capabilities of the ordinary people of this country. Instead, G stands for government intrusion and tax terrorism, D stands for demographic betrayal, and P stands for poverty continuing. This actual GDP also jettisons the trinity of demography, democracy, and diversity the government claims to be serving. The demographic dividend is on the cusp of becoming a demographic disaster with the unemployment crisis, the K-shaped growth, and the ever-widening schism between the rich and the poor. Democracy is suffering through this government's arrogant contempt for institutions, a government that suspended 146 MPs rather than be held accountable for a security breach, that bulldozes laws as per its own whims and fancies with no regard for parliamentary procedure, that requires a no-confidence motion to be moved before its leaders are willing to speak on vital issues, including Manipur, should ideally refrain from claiming to be the messiah of democracy, let alone its mother. And when it comes to diversity, we know the record hasn't been great either, with increasing attacks on religious minorities, the ruthless dispensing of bulldozer justice, mob lynching, communal violence, and worse, combined with the disregard for states and their operations through a skewed and centralizing cooperative federalism, under which the states are meant to cooperate, but the centre operates as it pleases. The government has failed gravely on all the counts where it pats its own back. Thank you. Therefore, sir, I'm concluding, this House must realize the game of smoke and mirrors that the government is playing with the interim budget, with nearly no redressal of the real crises plaguing our economy and affecting the Aam Aadmi. It is high time that this election gives others an opportunity to show up their shallow rhetoric for what it is, which is all talk and no action. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. I should thank you, Dr. Tharoor. It is not only your eloquence, but your content, for which we have been awarded yesterday in a very beautiful function. Now I request Sri Nishikant Dubey ji